Good morning, students. Welcome back in a science class. Today we will continue lesson 3, chemical substances and processes. Again, what is the name of this lesson? Chemical substances and processes. Page number 36. Open page number 36. Hurry up. Today we will do, in previous class we have done up to example 1. Now today we will do example 2 and example 3. Open your book, page number 36 beta. Hurry up. Listen student, open page number 36. Today we will do example 2 and example 3. Yes beta, example 1 to example 2 to write the formula of aluminium sulfate. In this example, we will write the formula of aluminium sulfate. How can we write the formula of aluminium sulfate? First of all, we have done in previous class symbol of aluminium Al, symbol of aluminium Al, and number of ions on aluminium we have done in previous class in table 3 plus. Okay. Then sulfate, symbol of sulfate SO4, and number of ions, there we will write bracket because in sulfate there is 1 sulfur and 4 oxygen. That's why we will write bracket. जहाँ single letter ना हो, ज़्यादा हो, तो वहाँ bracket लगाएंगे हम बेटा. And number of ions 2 negative. There is 2 negative charge. Listen, first of all we will write the symbol of element Al, then sulfate SO4 2 minus. Symbol of aluminum Al, sulfate SO4, and ions 3 plus 2 minus. Like this beta. You will write very carefully. Okay. Next beta. There is no common factor 3 and 2. In 3 and 2 there is no common factor. That's why we will not cancel this. We will only crisscross. There is no common factor corresponding to charges. इसको हम आयंस बोलते हैं और जो ऊपर ये है इसे चार्ज बोलते हैं. 3 plus 2 minus. There is no common factor between charges 2 and 3. 2 and 3 के बीच में कोई भी common factor नहीं है बेटा. That's why we cannot cancel it. यहाँ लिख देते हैं 2 and 3. Okay.
Yes, beta. Next step, crisscross. Now we will crisscross. crisscross में क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को चार्ज को सल्फेट के पास ले जाएंगे और सल्फेट के चार्ज को एल्यूमिनियम के। AlSO4, right bracket beta. Listen, you will write this bracket, otherwise it is wrong. 3 we will write here and 2 को हम यहाँ लिख देंगे। Al2SO4 3. What is the formula of aluminium sulfate? Al2SO4 3. This is the formula of aluminium sulfate. This is the formula of aluminium sulfate. Next, calcium carbonate. Next formula, calcium carbonate. Example 3. Example 3 beta. Calcium carbonate. To write the formula of we will write the formula of calcium carbonate. Calcium, first of all we will write the symbol of calcium. Calcium Ca2+, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, एंड कार्बोनेट CO3. नंबर ऑफ चार्जेस 2-. We have done in previous video. Calcium charges positive charge, carbonate negative charge. Calcium 2 positive charge and carbonate 2 negative charge. Listen, there is common factor between 2 and 2. First of all, we will remove the common factor. 2 में से कॉमन फैक्टर 2 ही होगा, इनको 2 से कैंसिल करेंगे हम। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, रिमूव कॉमन फैक्टर। Ca2 को 2 से हम कैंसिल करेंगे तो ओनली 1, अगेन कैंसिल बाय 2, ओनली 1. Clear? Second step. In third step, we will crisscross. We will crisscross number in third crisscross तो आप किस क्रॉस करोगे, 1-1 है। Ca1 वी विल नॉट राइट 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे CO3 इसके साथ भी 1 लगाना है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो फार्मूला क्या बन गया हमारा, देखो यहाँ 1 लगाना है हमें और यहाँ भी 1 लगाना है। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, CaCO3. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हुआ, CaCO3. What is the formula of calcium carbonate? CaCO3.